Hello everyone, welcome to LUKMAAN IAS. Today we are going to have the Hindu analysis of 25th August 2020. So let us see which are the important articles in today's newspaper. So these are for prelims and for mains, we have segregated them. Let us see one by one. First article on page number 6, editorial page. India does need a fiscal council. Now those who are in our foundation batch or editorial discussion batch, in last week or previous week we had a detailed discussion on this topic, and you have understood what do you mean by a fiscal council, what is the need of that. However, again the article has appeared in the Hindu newspaper. We will discuss that in detail again for all students here. So need of independent fiscal council. Try to understand when we talk about independent fiscal council, it is something related to fiscal consolidation, or we can say prudency in the budget process. ठीक है, budgetary process. तो वहाँ पे जो बोलते हैं हम कि कॉम्प्रेहेंसिवनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ऑन द एग्जीक्यूटिव, ऑन द बिहाफ ऑफ एग्जीक्यूटिव. सो ये जो है कहीं ना कहीं लैकिंग है अभी राइट नाउ. एट द सेम टाइम द कोविड-19 पैंडमिक एंड द लॉकडाउन हैज़ प्रोवाइडेड इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन फिजिकल we can say space here. Fiscal situation in India has been under severe stress even before COVID-19, and novel coronavirus pandemic has only worsened it. तो यहाँ पे कुछ important facts है वो आपको note down करने चाहिए. You can use this as argument to support your argument. For example, fiscal deficit at the center in 2019-20 as estimated by Controller General of Accounts was 4.6%, 0.8 percentage point higher than revised estimates. The consolidated deficit of union and state together could be as high as 12% of the GDP, and overall public debt could go up to 85%. So such kind of situation we have at present of public finances, and therefore there is let's say also need of, it is necessary that the government must return to the credible fiscal consolidation path once the crisis gets over. Besides large deficits and debts, there are questions of comprehensiveness, transparency and accountability in the budgets. The practices like repeated postponement of targets, timely non-settlement of bill payments and off-budget financing to show lower deficit has been a common. ठीक है, तो ये कुछ क्या बोल सकते हैं हम, गलत प्रैक्टिसेस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस इन बजट मेकिंग प्रोसेस और पब्लिक फाइनेंसेस, वी कैन से दैट. So the independent fiscal council is recommended by various committees and commissions. For example, 13th Finance Commission and 14th Finance Commission recommended that. Even the FRBM review committee, यहाँ पे इस पार्ट में ये आर्टिकल में बता रहे हैं कि कौन कौन कैसे कैसे रिकमेंड करता है. इवन द फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य, उन्होंने उनके बुक में भी ये मेंशन कर चुके हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि रिकमेंडेशंस किन के है और हमने क्या करना है. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग इंडिपेंडेंट काउंसिल, फिजिकल काउंसिल. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल काउंसिल. ठीक है, तो क्या होता है कि फिजिकल काउंसिल इज एन इंडिपेंडेंट फिजिकल इंस्टीट्यूशन विद द मैंडेट ऑफ प्रमोट स्टेबल एंड सस्टेनेबल पब्लिक फिनेंसेस. ठीक है, तो an unbiased report to parliament helps to raise the level of debate and brings greater transparency and accountability. Now this is the plus point. First plus point, we can say that significance part. Costing of various policies and programs can help promote transparency. Scientific estimates of cost of programs and assessment of forecast could raise the public awareness, and council will work as a conscience keeper in promoting rule based policies. Fine. So this is very important points you need to understand and mention जब भी आप significance की बात करते हैं. At the same time, you need to know that there are some international practices in line with this fiscal council. For example, IMF in one of its reports said that there were 36 countries with independent fiscal we can say that institutions in 2014. ठीक है, तो ये जो
इंडिपेंडेंट फिजिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये एक हम बोलते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ है उनमें एक नॉर्म है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। और अभी इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज़, उनमें भी बात चल रही है कि वो ज़्यादातर अडॉप्ट करें। फॉर एग्जांपल इन यूके द ऑफिस फॉर बजटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट इन रिस्टोरिंग फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। तो ऐसे इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स आपको मेंशन करने चाहिए आंसर में। व्हेन द मार्केट्स फेल गवर्नमेंट हैव टू इंटरवीन, एंड what do we do when the governments fail? It is here that we need systems and institutions to ensure checks and balances. तो ऐसे आप उसको कंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप आर्ग्यूमेंट में भी लिख सकते हो, राइट। सो नीड ऑफ फिजिकल काउंसिल, वी कैन हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हियर। एग्जामाइन द नीड ऑफ इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल इन इंडिया टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन बजट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम वो आंसर ले सकते हैं आर्टिकल से। नेक्स्ट on page number 7, op-ed page, challenge of catching elusive taxpayers. The article is specifically talking about tax reforms in the past and the new tax reforms and some limitations to that. So here some important facts we have to understand, that the number of tax filers has increased but the number of taxpayers has dropped. इसका मीनिंग ये है एक्चुअली कि टैक्स फाइलिंग बढ़ गया है, क्योंकि जो 5 लाख एंड बिलो जिनका इनकम है उनको टैक्स रिटर्न्स भरने की क्या बोलते हैं हम उसको, किसी भी तरीके का इनकम टैक्स नहीं है, दे डू नॉट हैव टू पे टैक्स, एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड फाइलिंग द रिटर्न्स टू अवेल द बेनिफिट्स इन फ्यूचर। ओके, एट द सेम टाइम द डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन परसेंटेज टर्म्स इज very low, that is about 5.5%. At the same time we have to understand that the inequality in the wealth generation, wealth accumulation, a 2016 report says that top 10% of Indians earn 55% of nation's income. So ये कुछ important facts है, यहाँ पे आप ऑक्सफैम रिपोर्ट का भी मेंशन कर सकते हो कि कैसे इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी, राइट। एट द सेम टाइम अगर ये सारे लोग अगर टॉप 10% इनकम टैक्स अच्छे से पे करना शुरू करेंगे तो आवर इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशो वुड बी अबाउट 18%। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि जो रिच लोग हैं, ठीक है, वो इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट यही प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि यस, रिच आर नॉट पेइंग देयर इनकम टैक्स। ठीक है, कहीं ना कहीं टैक्स अवॉइडेंस की बात होती है। एट द सेम टाइम दे आर लॉबिंग विद द गवर्नमेंट टू रिड्यूस टैक्स रेट्स, और जो टैक्स कंसेशंस की बात होती है। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, ठीक है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स इन्हीं रिच लोगों को मिल रहा है। एट द सेम टाइम दे आर डिमांडिंग लोअर टैक्स रेट्स एंड कंसेशंस, और वो बोल रहे हैं कि मतलब देखा जाए तो 1991 के रिफॉर्म्स से ये जो हमारा क्यूमुलेटिव टैक्स जो होता है, हाईएस्ट टैक्स, वो ऑलमोस्ट 97% से अभी 30% के आसपास जब है, 25% टू 30% तक आ चुका है। एंड देन स्टिल दे आर आर्ग्यूइंग दैट आवर टैक्स रेट्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड देयरफॉर दे शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि गलत हो रहा है, या देयर डिमांड्स आर रॉन्ग हियर। ओके, दैट इज लीडिंग टू सोशल इनइक्वालिटी, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द कंट्री। ओके, सो वी नो दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी कंसिडर इंडिया एज वन ऑफ द सोशलिस्ट कंट्री, या फिर हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो नेहरू जी ने शुरू किया था, तो वहाँ से हमने वो जो फॉलो किया है, what you can say, redistribution of wealth and all these things are there, right, in our DPSPs, directive principles of state policies. So that should be implemented. The government is doing working on that. However, as we know that more and more we are moving towards open economy and less regulation by the government, these rich are going to benefit more and more. Okay, so next argument it is providing that rich are fleeing the country. कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट हो रहा है कि टैक्स ज़्यादा होने की वजह से उनको जहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है वो डेवलप कंट्रीज़ में जाके सेटल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 23,000 हाई नेट वर्थ लेफ्ट कंट्री इन 5 years अप टू 2019। पिछले 5 साल में इतने सारे हाई नेट वर्थ जो इंडिविजुअल्स है वो यहाँ से चले गए बिकॉज ऑफ हाई टैक्स रेट और टैक्स रेट्स इन कंट्री।
Fine. So next argument, it is saying that the tax reforms which are taken up until now, जैसे कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ टैक्स रिकॉर्ड्स है या फिर टैक्स फाइलिंग है, और द ऑनरिंग द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, ऐसे स्कीम्स जो लाई गई थी पहले भी, या फिर जो अभी रिसेंटली जो स्कीम लाई गई थी विवाद से विश्वास स्कीम जो है, टैक्स जो रिजोल्यूशन वाला जो कंसेप्ट है. Fine. So these have not been that much effective in ensuring the tax compliance by these people. Okay. So that's why recently the government has come up with new scheme, जो हम बोलते हैं कि new tax reforms, wherein it wants to make the taxation system faceless, or we can say painless and seamless. ठीक है. तो faceless का मतलब यहाँ पे actually argument में आपको explanation में दिखेगा कि the computer will decide who will assesses the tax returns of the individual during the different stages of case. Different officers will be involved. This is to let's say remove any nexus involved between the taxpayers and the officers, and the department is being reorganized into assessment units, verification units, review units and technical units. But still there are challenges and limitations to this new scheme also, like there is worry that software that can be manipulated by those who know the system, or department is grossly understaffed and officers have inadequate time to scrutinize the cases. So ये limitations है हम बोल सकते हैं. And then this argument that highest tax rate has been brought down from 97% in 1971 to 30% now. Even some we can say that acts which were considered anti-market like MRTP Act or FERA Act, they were removed in 1991 we can say reforms. तो वहाँ तक पहले ये remove कर चुके थे हमने. But the well-off have constantly complained that tax rates are high and there are too many controls. This lament is rather unfair since they have gained the most out of the country's development. ठीक है. तो ये एक आर्गुमेंट आपको पता होना चाहिए. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंटर टू द फीलिंग दैट सोशल जस्टिस injustice in every section of the population. The well-off who have gained the most complain of it and the poor live with injustice. ये एक प्रेजेंट सिचुएशन है. ठीक है, ये पर्सनल ओपिनियन है राइटर का. हाउएवर हमें ये कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये आर्गुमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. फाइन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. Parliamentary panel calls DNA bill premature, or we can say DNA bill can be misused, flags the draft report. Recently, the Parliamentary Standing Committee on Science and Technology has analyzed the DNA bill and given a draft report. Highlights of this draft report suggest that this bill, which has been, let's say, proposes to DNA sampling and profiling of citizens accused of crime or reported missing or storing their unique genetic information for administrative purpose, has some alarming provision that could be misused for caste or community based profiling. So this is again one of the important concern in DNA bill कि जो कम्युनिटी बेस्ड या कास्ट बेस्ड प्रोफाइलिंग हो सकता है इंडिविजुअल्स का, तो दैट इज अगेन द प्रॉब्लम. एट द सेम टाइम it also reveals sensitive information of the individual. That's why we can say that can be misused to specifically target individuals and their families. It also red flagged disregard to individuals' privacy and other safeguards. At the same time, in the absence of robust data protection legislation, it is questionable to let's say store this data at National DNA Data Bank. The bill permits retention of DNA found at a crime scene in perpetuity even if the conviction of offender has been overturned. अब ये तो प्रॉब्लम है ना कि जब ओवरटर्न हो गया है, ठीक है, कन्विक्शन, तो वो डिलीट हो जाना चाहिए. दैट्स व्हाई द कमिटी अर्ज द गवर्नमेंट टू अमेंड दिस प्रोविजन. The bill also provides that DNA profiles of the civil matters will be provided in data banks. तो सिविल मैटर्स का नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल मैटर्स का होना चाहिए, ऐसे कमिटी का आर्गुमेंट है. एंड दैट्स व्हाई this violates the fundamental right to privacy and does not serve any public purpose. This is the view of Parliamentary Standing Committee. So we need to understand the, we can say, criticism of this DNA bill. Like, despite its benefit, DNA bill has some questionable provisions which needs to be relooked at by the government. Discuss the statement in the light of draft
रिपोर्ट बाय पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डीएनए बिल। ठीक है, तो यही आर्गुमेंट्स आपको बताने हैं कि हाउ इट इज हैविंग सम प्रॉब्लम्स डीएनए बिल, ओके, और इट मे लीड टू प्रॉब्लम्स, सो दैट्स व्हाई सम प्रोविजंस नीड्स टू बी रीलुक्ड एट बाय द गवर्नमेंट। Fine. So moving on to next article, virus breaches another wall, 4 Bondas test positive. Now Bondas is a tribal community residing in the hill ranges of Malkanjgiri district of Odisha. Now we have to understand that Odisha is having a very large number of tribal communities, 62 tribal communities, the largest diverse groups of tribal population in India, and 13 of them are PVTG. PVTG मतलब क्या है कि particularly vulnerable tribal group. Now Bondas are also this PVTG and their population is around 7,000. So for our prelims purpose, what do you mean by PVTGs और इंडिया में कितने PVTGs है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये हमें पता होना चाहिए। For example, PVTGs are more vulnerable among the tribal groups, and due to this factor, more developed and assertive tribal groups take major chunk of the tribal development funds, and therefore the targeted development of PVTGs is required here. Okay, so कब से शुरू हुआ है ये categorization? 1973 में देभार कमीशन created primitive tribal groups as a separate category, and in 2006 the government of India renamed PTGs to PVTGs. ठीक है, पहले नाम क्या था? Primitive tribal groups. Now it is particularly vulnerable tribal groups. At present there are 75 PVTGs out of 705 scheduled tribes. 705 जो शेड्यूल ट्राइब्स है इंडिया में, उससे जो जीरो हटा दीजिए बीच का, 75 PVTGs है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, दोनों फैक्ट्स। PVTGs has some basic characteristics. For example, they are mostly homogeneous with small population, relatively physically isolated, absence of written language and relatively simple technology and slower rate of change. Among the 75 listed PVTGs, the largest number, that is 13, are found in Odisha. अभी हमने देखा ये कि ओडिशा में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, पाए जाते हैं PVTGs, particularly vulnerable tribal groups. तो इनके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो एक पर्टिकुलर स्कीम जो है, स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ PVTGs which covers all 75 PVTGs for their comprehensive socio-economic development. So such kind of prelims question we can expect from this. At present there are total 75 PVTGs vulnerable, particularly vulnerable groups. ठीक है, ये करेक्ट है। लार्जेस्ट नंबर आर फाउंड इन झारखंड, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दे आर फाउंड इन ओडिशा। बोंडा ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट इज PVTG, यस। तो ये न्यूज़ में होता है, इसलिए हमें एक स्पेसिफिक ट्राइबल के लिए हम पूछ सकते हैं दैट यस दिस इज ऑल्सो, दैट्स वाई 1 and 3 इज द आंसर। नेक्स्ट, यस, थोड़ा सा हम देखते हैं कि मिसलिनियस न्यूज़ भी कुछ पता होनी चाहिए कि लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, तो हमारे लिए एक जनरल नॉलेज के दौर से हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। दैट्स वाई द इंडियाज लॉन्गेस्ट पैसेंजर रोपवे अक्रॉस रिवर अनवील्ड इन गुवाहाटी। ऑब्वियसली गुवाहाटी में तो रिवर कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र रिवर। 1.82 किलोमीटर बाय केबल जिगपैक रोपवे कनेक्ट्स द फॉरेस्ट कैंपर नियर लेट्स से कामरूप और मेट्रो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस इन सिटी ऑन द साउदर्न बैंक एंड हिलॉक बिहाइंड द Dal Gonda temple in the North Guwahati. Ropeway passes over the mid Peacock Island, mid river Peacock Island. ठीक है, मतलब ये riverine island है, Peacock Island, that houses Umananda, a medieval Shiva temple. ठीक है, तो ये एक हम बोल सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि Peacock Island is riverine island and Umananda, a medieval Shiva temple, is located on that. So from we can say that culture perspective also, it also offers the scenic view. Each cabin can carry 32 people. The longest passenger ropeway on land is one in we can say गुलमार्ग कश्मीर। ठीक है, तो लैंड पे जो है अक्रॉस द लैंड जो होता है, ठीक है, हिल टू हिल जो कवर करते हैं, वो है गुलमार्ग में, कश्मीर में। और अक्रॉस रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट अभी ये होगा ब्रह्मपुत्र के अक्रॉस, ठीक है, गुवाहाटी में। नेक्स्ट, हांगकांग रिपोर्ट्स फर्स्ट वायरस रीइन्फेक्शन। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि रीइन्फेक्शन हो सकता है या नहीं। द हिंदू में FAQ आया हुआ था और हमने वो डिस्कस किया था, और तब भी साइंटिस्ट ने बोला था कि ये रीइन्फेक्शन होने के चांसेस एकदम निग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। हाउएवर नाउ वी हैव फाउंड द फर्स्ट रजिस्टर्ड केस हियर,
that the Hong Kong man who recovered from COVID-19 has was infected again 4.5 months later in the first documented instance of human reinfections. ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के यहाँ पे रिसर्चर्स ने बोला है. However, the finding indicates that disease may continue to spread among the global population despite herd immunity. ऐसा उनका मानना है. However, WHO experts have saying that we need not to jump to the any conclusion because instances of people discharged from hospital and testing positive again for COVID-19 infection have been reported in mainland China also. Fine. So, however, in those cases it was not clear whether they had contracted the virus again after the full recovery as happened in Hong Kong patient case or still had the virus in their body. ठीक है, तो ये हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है. तो इसका जो हांगकांग केस का एक्सप्लेनेशन एक तो ये हो सकता है दैट द वायरस स्टिल एग्जिस्टेड इन द लंग्स ऑफ पेशेंट्स but was not detected in the sample taken from the upper parts of respiratory tracts. On the other possibilities could be like low sensitivity of tests and weak immunity that could have led to persistent positive results. So these are we can say this may be the reasons. However, the reinfection by the coronavirus is again we can say that is a less possibility here. According to experts, we need not to jump to the any conclusion right now that there can be reinfection because of the coronavirus. ठीक है, तो ये हम follow up रखेंगे COVID-19 के लिए. Captions and quotation. One important caption we can have this: when the market fail, government have to intervene. And what do we do when the government fail? Here it is, we need to have systems and institutions to ensure checks and balances. Fine. So for we can say that these are the important articles appeared in today's newspaper. Try to take inputs from these articles. For further information about editorial discussion classes wherein in-depth analysis of all mains related articles is done by Ansari Sir and team, you can contact LUKMAAN IAS. Thank you.